Let's continue with the revision that we had done very quickly. Ariba, Aman is there, Gausia is there, Saransh is there. You said you are the only one. मैम पहले इससे पहले मैम you and me only we were there. Beta, I was just changing the PDF actually. Hanji, we had done all these 18 till, if you remember, till here. I'll ask you later. So we had done till here, children. Now we are going to do this part. This I told you to leave. I told you to do this, if you remember. है ना? This I had told you to do. चलो यहाँ से I'm taking up very quickly with you. कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें. Let's do it quickly. Reproduction enables the continuity of species generation after generation. What is the advantage or what is the significance of reproduction? Continuity of species generation after generation. Extinction does not come. Second, the habitat and the internal physiology of the organism are responsible for the mode of its reproduction. What will be the mode of the reproduction will depend upon two things, beta, the habitat of the organism and the second is the internal physiology. What are the two factors which are responsible for the mode of reproduction? Physiology and habitat. Yes, habitat and internal physiology. Second, we know this reproduction is classified into the two types, sexual and asexual. Four changes you should know differences. Single parent, two parents. Does not involve formation of gametes, formation and fusion of gametes. बेटा दोनों वर्ड जरूर लिखना, formation and fusion. ये दोनों जरूर लिखा करो. आप चाहे तो इसका अलग पॉइंट बना लो. It does not involve formation of gametes, it involves formation of gametes. No fusion, fusion. 3 पॉइंट हो जाएंगे. It involves only mitotic division. This involves meiosis at some stage of life. Some states surely mitosis तो होगा, but at some stage meiosis is also there. All individuals produced are genetically identical, जिनको हम क्या बोलते हैं, clone, and all individuals produced exhibit variations, that is offsprings. So you can make 5 differences in sexual and asexual reproduction. Before I move on to modes of asexual reproduction, very quickly, significance of reproduction, everybody knows. What are the two factors which decide what will be the mode of reproduction? Habitat and internal physiology. Yes. Then we'll come to two modes of reproduction. इसमें ये 5 differences are there. So 2 minutes, 2 minutes बाद में पहले ये ले लेते हैं. Modes of asexual reproduction. Cell division is the mode of asexual reproduction in single cell organisms. 1 mark answer if it comes. Tell me very quickly. What is the mode of asexual reproduction in single cell organisms? It is cell division. Cell division. Cell division. In Monerin's protist, the single cell divides into two daughter cells and individuals. अभी हमने पढ़ा. Single cell organisms, asexual mode of reproduction कौन सा है? Cell division. Let us talk about Monera and Protista. यहाँ पे भी वही होता है बेटा. Single cell, it divides into two daughter cells. तो कौन सा fission हो गया? Binary fission. The process of division of one organism into daughter cells or individuals is called fission. Fission is of two types. Number one is binary fission. Parent cell divides into two halves and each grows rapidly into an adult. Example, amoeba and paramecium. इसको बेटा ध्यान दे दो पहले. ये adult amoeba है. This is the nucleus if you see. आगे जाकर के nucleus elongation है. आपका जो step आ रहा है ये. Excuse me, ma'am. Yes बेटा continue. बोलो. Ma'am, I can't hear you. Sure. Others can hear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then I think there is some problem at your end, beta. See, this is your parent cell. When you draw amoeba, remember these steps. These are pseudopodias. Can you see the pseudopodias in the first figure, beta? Yes, ma'am. So first stage में pseudopodia is withdrawn. ये जो pseudopodia बाहर को extend करेगी थी इसको हटा देना, draw करते समय इसे बंद कर देना यहाँ से. So what is the first step? Pseudopodia withdrawn. Second step में ये nucleus is going to get elongated. दिख रहा है ये nucleus elongated? ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, में यहाँ ma'am. से ये देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म इज आल्सो गेटिंग कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है. यहाँ पे इस स्टेज इस जगह से क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया सेल. कॉन्स्ट्रिक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो बाय दिस कॉन्ट्रैक्शन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है इनटू टू पार्ट्स एंड देन फाइनली व्हाट यू गेट इज टू डॉटर सेल्स. सो वेरी क्विकली दिस इज द एडल्ट अमीबा. सबसे फर्स्ट स्टेज में क्या दिखाना है? Parent cell. Ma'am, withdrawn Parent cell. pseudopodia.
पेरेंट सेल के ये जो सीडोपोडिया है ये सेकंड स्टेज में खत्म हो जाएंगे, सो सीडोपोडिया विथड्रॉन. थर्ड स्टेज इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियस इलॉन्गेशन. फोर्थ इज दिस कॉन्स्ट्रिक्शन ओवर हियर, जिसमें साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी साइटोप्लाज्म इज गेटिंग डिवाइडेड एंड देन यू विल शो दीस. So how many stages are you going to show in binary fission for drawing very quickly? 4. 5 stages. अरे पेरेंट से स्टार्ट करते हैं. 5. पेरेंट अमीबा, सेकंड स्टेप में क्या होगा? टेल मी क्विकली. Pseudopodia. Withdrawn or pseudopodia. Yes, pseudopodia is withdrawn. Third stage, Elongation of nucleus. very good. Elongation of Fourth nucleus. stage, fourth stage, Cell. Contradiction of cell. constriction in the cell, because of which cytoplasm is going to divide and then we're going to get two daughter cells. Chale, multiple fission. In this method, the parent cell divides into many daughter cells. Each grows into an adult. Example देंगे plasmodium का. इसका example जाएगा बेटा जी यहाँ पे plasmodium का. See this. We've taken an example. In yeast, cell division is unequal and results in large and small cell. ये बहुत important है. Sometimes they'll ask you 1 mark question में. Name the organism in which cell division is. देखो यहाँ पे देखो daughter cells equal है unequal है amoeba में. Equal. Equal. They are equal. अब इससे थोड़ा अलग पढ़ते हैं. In each cell division is unequal, results in a large cell and a small cell. Okay, called bud, which remains attached to the large cell. What is the small cell called? But Bud. Small cell is called a bud, and this will remain attached to the large cell. Later, it will get separated and grow into an adult yeast. चलिए figure से समझते हैं इसको. ये देखिए आपका. This is your parent cell. The first condition. What is this? This is your parent cell. सेम प्रोसेस हो रहा है बेटा. यहाँ पे देखो डिवाइडिंग न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज गेटिंग इलोंगेटेड. ये ऊपर ये एक छोटा डिवीजन हो गया. ये छोटा सेल आया, ये वाला आपका. ये छोटा कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है, बड वाला पार्ट. नाउ योर न्यूक्लियस विल गेट इलोंगेटेड. आफ्टर योर न्यूक्लियस गेट्स इलोंगेटेड, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. एक पार्ट तो चला जाएगा ये बड वाले पार्ट में. अब बड थोड़ी बड़ी हो गई है एंड दूसरा न्यूक्लियस आ गया लोअर वाले पार्ट में. साइटोप्लाज्म, ये देखिए इन दोनों का न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द बड एंड ये न्यूक्लियस ऑफ द लोअर पार्ट. So we are showing this is what fission? What fission is this? multiple. Multiple fission. बेटा यहाँ पे ये elongation जो हो रहा है ये. What is this called? This smaller cell? But Bud. What is the difference here in amoeba and yeast का daughter cells? जल्दी से बताइए. Some equal and unequal division. मैं वहाँ पे equal थे, यहाँ पे unequal division है. One more thing I want you to see and tell me कि क्या bud हमेशा attached रहेगा parent cell से? No, ma'am, it No, will ma'am. detach. Okay. Would you consider it as a sexual mode or asexual mode? Asexual. Asexual. Asexual mode, all of you for sure. Main difference क्या दिखाई Yes, दिया? Um, What is The asexual the number mode. of daughter cells are unequal. They are equal, and here if you see they are not equal. Okay. What are the two most common modes of asexual reproduction, beta? Fission. Fission or budding. Yes. Yes. तो ये budding हो गया आपका. वो fission हो गया, ये आपका क्या हो गया? Budding हो गया. Budding. Okay. We are coming to something very quickly. बेटा PDF I think group पे डाली हुई है. देख मैम लेना आपने इसको. वो वाली भेजी ह्यूमन डिजीज, हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीज वाली. अच्छा Yes, ये वाली ma'am. नहीं डाली है. मैं ये भी डाल दूंगी. Today I'll do it. Sporulation is the phenomenon employed by amoeba. Now we are coming to amoeba. What is the process? Sporulation. We are doing which mode of reproduction, children? Which one are we discussing? Sexual. Asexual. And asexual. Asexual में first वाला कौन सा discuss किया? Binary Fission. 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 मैम ये होता क्या है स्पोरुलेशन? बेटा वो spores बनते हैं ना, क्लास 10th में पढ़ा था. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है? सिस्ट फॉर्मेशन होता है
अंदर स्पोर्स रहते हैं, जब तक अच्छा। फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो केस Yes, बर्स्ट ma'am. कर जाएगा, स्पोर्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। शायद आपको याद होगा 10th में हमने पढ़ा था कि ब्रेड मोल्ड वाला, स्पोर्स Yes, एयर में ma'am. रहते हैं, Yes, जैसे ही ma'am. Yes, सूटेबल ma'am. मीडियम मिलता है, मॉइस्ट ब्रेड मिल जाती है, तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। अच्छा, लेट मी सम अप फर्स्ट। वी वर डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल, अगर आता है शॉर्ट नोट ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 मार्क्स क्वेश्चन, आप पहले डेफिनेशन दोगे, फिर फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू विल डिस्कस इज फिशन, जिसमें आपने अभी किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, अमीबा का बाइनरी में। Amoeba. Binary. एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, व्हिच वन विल यू शो, किसका डिस्कस करोगे? मल्टीपल फिजन Multiple क्लास। class Class body में. N. Yes. Now come to sporulation. This is also employed by amoeba. Under unfavorable conditions, it shows incestation. Incestation means formation of a cyst. याद है what is a cyst? यस Production. Yes, ma'am. Yes. मैम So कवरिंग। first stage में वो वही करेगा बेटा जो उधर कर रहा था. It will withdraw its pseudopodia and then it will secrete a 3-layered hard covering जिसे हम क्या बोलते हैं, cyst. सबसे पहले वो अपनी बॉडी को कॉन्स्ट्रिक्ट करके एकदम रिजिड बना लेगा, छोटा बना लेगा, सर्कुलर बना लेगा, उसके लिए वो अपना सीडोपोडिया विड्रॉ करेगा एंड आफ्टर दैट 3-लेयर कवरिंग बनाएगा अराउंड इट्स बॉडी. 3-layered covering. What is that 3-layered covering called? Cyst. It is called cyst. So amoeba now has a cyst. जब तक conditions unfavorable है, amoeba बहुत safe है because there are 3-layer covers on it. At the return of the favorable conditions, amoeba will undergo multiple fission, forming a number of minute amoebae called as pseudopodiospores. What do we call them as? सीडोपोडियस। Pseudopodium. Body sports. अब आपकी cyst wall burst कर जाएगी, spores liberate हो जाएंगे, and each one will grow into an adult amoeba. So basically, unfavorable conditions में cyst formation हुआ. पहले सबसे पहले pseudopodia withdraw हो गया, 3-layer cover बन गई जिसे हम cyst कहते हैं. As soon as favorable conditions आएंगी, amoeba will start dividing. बहुत सारे small amoeba, and then cyst wall जब burst करेगी तो spores they will liberate out. Okay, ये pseudospores ना भी याद करो, सिर्फ ये याद कर लीजिए spores. When the cyst wall will burst, what will be liberated is spores, and each spore will release and become what? It will become one big amoeba cell. Clear everybody? एक ये और देखना है, in fungus and algae, specialized asexual reproductive units are formed. Zoospores are formed in algae and certain aquatic fungi are motile with flagella. Zoospores. Which are the special structures which are found in algae? Juice sports. Zoospores. Zoospores. And in some fungus also. Zoospores की खास बात, सबसे स्पेशल बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, they are motile because they have flagella. ये देखो बेटा zoospores. इनका ये पिक्चर में डायग्राम जो है ये दिमाग में बसा लो इसको. Zoospores की सबसे स्पेशल फीचर कभी पूछा जाए तो हमें ये याद रखना है. What they have? Flagella. Can you see the Flagella. flagellas? Yes, Yes. ma'am. So this shows that they are motile. ये difference आता है between conidia and zoospores. So बहुत important है ये conidia and zoospore का difference. पहला difference, conidia is formed in algae and some fungus varieties, and conidia is formed in penicillium and asparagus. जल्दी से, zoospores is found in algae and Algae and fungi. Aquatic fungi. and conidia is found in which two varieties you will mention? Penicillium aspergillus. Zoospores are motile because they have what? Flagella. Flagella. And यहाँ पे conidia देखो, they are non-motile. Can you see the conidias? They are non-motile. Yes, ma'am. These are the zoospores of Chlamydomonas. Do they have? They have flagella, तो ये motile होंगे. And conidias of Penicillium. नाम याद रखिएगा. Zoospores of Chlamydomonas and over here conidia of Penicillium. So what are the two differences? किस variety में होती है? बस ये याद रखना. ये बहुत important topic है. पूरा मैं आज नहीं ले रही हूँ. बस ये याद रखना है difference between zoospore and conidia. So by tomorrow you need to learn this process, entire asexual reproduction mode जो करा है. एक तो ये कर लेना, difference between sexual asexual, binary fission, multiple fission, फिर आपका sporulation and difference between zoospores and conidias. Will you be able to cover this much? Very quick revision. Zoospores are found in algae and certain varieties of Fungi. 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 Conidia are found in which two varieties? Penicillium. Penicillium and Aspergillus.
वेरी गुड। द मेन डिफरेंस अगर आता भी है, मेन डिफरेंस 1 मार्क का, तो हाफ अ मार्क आपको इसको मिल जाएगा कि दोनों आप बता देना कौन सी वैरायटीज है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, zoospores they are motile because they have flagella, and conidia they are non motile. चलिए बेटा, you can take your break. I think most of you have to go to school also today. Yes, Okay? sir. Yes, ma'am. God bless you all. मैं ये वाली भी PDF आज पोस्ट कर दूंगी बेटा। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Read ma'am. the meeting. It's already 46. Bye बेटा. God bless you all. Thank you, Thank you, ma'am. God bless. God bless.